Hello, friends. Today we will discuss a very important topic that is essential for all, not only for students but also for the teachers. Today we will discuss the topic research, meaning, nature, and types. Well, the need and importance of research for development of the individual, progress of the society, and prosperity of a state and the globe as a whole. Today we'll discuss the meaning of research, derivative meaning, dictionary meaning, and definitions given by different experts. Then we'll discuss in short what are the nature and characteristics of research. Then we will discuss the types of research. Okay, without making it late, we will start. What is research? Before discussing the what is research, we will discuss first what is the importance of research. Why research is essential? Dear friends, once upon a time, human beings were maintaining very wandering life. They were moving, or you can say, you were traveling hither and thither. Once upon a time, we were in the Stone Age, but today we are at the space age of science and technology, age of artificial intelligence, age of advanced your technology, information and communication technology. So the transformation what is made from stone age to space age, that is nothing but the research, newer and newer research, or different kind of the research conducted by the human beings from time to time on the basis of the needs, on the basis of the needs of the individual, needs of the society, and also the world. Okay, so this is the output of research only. The changes have been made in the society, in science, technology, philosophy, literature, in every spheres, or in our lifestyle and living style also. That is the output of research. And research, what is the importance of research then? It search the knowledge and verifying the truth. Okay, to solve the different problems, that is scientific, non-scientific, and social problems, research is essential to discover new facts, ideas, theories. Okay, that is also research is also essential. That is the importance of research, and also to verify and test important facts and findings. We have to depend on the research because of the research, different because of the your different data collected through the process of research. We can only verify the facts, theories, findings, right? And we also test the different test facts and findings also. So, and the research, another importance of research is to analyze an event or process, to develop different scientific tools, concepts, and theories. For developing different tools and techniques, the concepts, the theories, we have to depend on the process of research. And to overcome or to solve the problems occurring in our day-to-day life, we have to depend on the research. Without research, we cannot. For example, COVID-19. Because of the research, we our scientists are able to develop the vaccines. So, from the social life to national life, from day-to-day life to the global aspects, we have to depend on the research. So you can understand better what is the importance of research. In also education, also from pedagogical aspects, for assessment, for evaluation, for guidance, counseling. So far, the different aspects of education is concerned for the betterment of the students, for the we can say the betterment of the stakeholders of education, we depend on the educational research or the research. So let us discuss the meaning of research. Here we will discuss three types of the meaning: derivative meaning, dictionary meaning, and definitions given by different experts. How the term research is derived? It is believed that the word research is derived from the French word rechercher, which means go about seeking. Go about seeking. So ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋ ଆବାଉଟ୍ ସିକିଂ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିବା, ତନ୍ନ କରି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଥାଏ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡସ୍ ରି ଆଣ୍ଡ ସେଟ୍ସ. ରି ମିନ୍ସ ଏ ଫ୍ରେସ୍ ଅର୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍. ରି ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର,
and search means to look for or to find out something concealed. सर्च अर्थ होची जो माने रियर अर्थ होची बारंबार सर्च अर्थ होची अन्वेषण करिवा तन्न तन्न करी आलोचना करिवा तन्न तन्न करी परीक्षा करिवा तो यदि संक्षेप रे हम कहबा गवेषणा कहले कौनसी विषय को तन्न तन्न करी परीक्षा करिवा तार सत्यता को उपलब्ध करिया प्रयास करिवा ता संबंध रे विभिन्न प्रकार तथ्य संग्रह करिवा ताकू कुहा जाय रिसर्च बा गवेषणा हेंस रिसर्च मीन्स producing new knowledge or adding something new to the existing stock of knowledge. नूतन ज्ञान को जोड़िबा नूतन ज्ञान आविष्कार करिबा किबा जो नूतन ज्ञान अछि से ज्ञान को परिवर्धित करिबा जो ज्ञान परिसीमा को और परिवर्धित करिबा होची गवेषणार मुख्य कार्य वा मुख्य अर्थ ओके लेट वी डिस्कस द डिक्शनरी मीनिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू and study of materials and sources in order to establish facts and research new conclusions. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अर्थ होची कोनोसी जिनिस संबंध रे बा कोनोसी वस्तु संबंध रे बा कोनोसी उत्स संबंध रे बारंबार कोन करी अनुसंधान करिबा तन्न तन्न करी परीक्षा करिया कोन पई टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रिसर्च न्यू कंक्लूजन एक उपसंहार रे पहुंचीबा एक माने सिद्धांत रे पहुंचीबा पई जो बारंबार जो अनुसंधान करा जाय से अनुसंधान करिबा जोरा कि धारावाहिक सिस्टमैटिक प्रोसेस संगठित उपाय रे क्रम भाव रे धारावाहिक भाव रे जो जिनिस को कौन करा जाए ना परीक्षा करा जाए निरंतर अनुसंधान करा जाए से अनुसंधान जो प्रक्रिया अछि ताको हम कह जाय गवेषणा ये होची ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रो अर्थ को मतरे लेट वी डिस्कस व्हाट इज द वेस्टर्न डिक्शनरी से रिगार्डिंग द रिसर्च studious inquiry or examination especially investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts revision of accepted theories or laws in the light of new facts or practical application of such new or revised theories of law अर्थात माने गवेषणार अर्थ होची अनुसंधान करिबा परीक्षण करिबा कोन पई नूतन जिनिसर आविष्कार करिबा पई नूतन जिनिस को व्याख्या करिबा पई तर्जमा करिबा पई एवं जो तत्व अछि विभिन्न लॉज अछि जो नियम अछि बा विभिन्न थ्योरी बा तत्व अछि से तत्व बा थ्योरी गुडी संबंध रे अधिक रु अधिक गवेषणा करिया पे अधिक नुआ नुआ तथ्य ताको संस्करण करिया पे रिवाइज करिया पे जो प्रक्रिया आवश्यक अछि ताको कहा जाय गवेषणा let us discuss the some definitions one or two definitions of the experts who said regarding the research J.W. Creswell, one of the reputed researcher who has also research wrote the book on research. He says research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue. At the general level, research consists of three steps: pose a question, collect data to answer, and present an answer to the question. Very, very comprehensive definition given by J.W. Creswell. He says, research is a process. It is a process. Research is it is a systematic process. And it is used for to collect and analyze information to increase our understanding. गोटे प्रसंग संबंध रे गोटे कोनसी इश्यू संबंध रे अधिक रु अधिक बोधगम्यता पाई जानिबा पाई आम जो तथ्य संग्रह करूछु एवं तथ्यर जो विश्लेषण करूछु से तथ्य संग्रह तथ्य विश्लेषण तथ्यर व्याख्याकरण बा तथ्यर जो तर्जमा करिवार जो प्रक्रिया अछि ताको कुआ जाय गवेषणा एवं ए गवेषणा रे साधारणतः तीनोटी मुख्य सोपान थाए बा तीनोटी पर्याय थाए कोन तीनटा सोपान पोज ए क्वेश्चन तो फर्स्ट एंड प्राइमरी the step of the research is to pose a question. You have to ask a question. Whenever you ask questions, what, why, and how, so you will enter into the research. तले तमे प्रश्न पचारिबा निज भितरे एटा कोन एटा काहे कि परिला ए मन भितर जो उद्दीपना सृष्टि हेबो तो क्यूरियोसिटी तयारी हेबो अभिसंदिष्ट मनोभाव तयारी हेबो सेटा ही गवेषणार आरंभ बोली कह जाय पारे द्वितीय कथा हला जदि प्रश्न आसेला मन भितरे से प्रश्नर उत्तर को समाधान करिया पई से हाइपोथेसिस ऑफ क्वेश्चन हो जत प्रश्न आसेला से प्रश्नर उत्तर खोजिया पई हमें कोन करबा वी हैव टू कलेक्ट द डाटा वी हैव टू कलेक्ट द डाटा टू गेट द आंसर वी हैव टू कलेक्ट दैट टू verify the question, right? So आमे जतल तार कोन करबा ना से प्रश्न उत्तर खोजिया पे चेष्टा करबा सेतला हम तथ्य संग्रह करिया पड़ियो जतल तथ्य संग्रह करि सारिबा तापर वी हैव टू एनालाइज ताको हम कोन करिया व्याख्या करिबा बा ताको विश्लेषण करिबा एवं विश्लेषण कला पर जो तर्जमा करिबा तार जो कंक्लूजन आसीबो ता होची दैट इज द रिसर्च फाइंडिंग दिस इज द वेरी comprehensive definition given by the Creswell.
Collinger, another reputed researcher, says research is a systematic, controlled, empirical, and critical investigation of hypothetical relations among natural phenomena. बड़ सुंदर कथा कहते इट इज सिस्टमैटिक नॉट अनसिस्टमैटिक माने गवेषणा होची एक कौन ना धारावाहिक एवं एक क्रमानु प्रक्रिया एक संगठित प्रक्रिया कौन होची याको नियंत्रित परिवेश भितर गवेषणा करा जाय थाए एवं सेठी प्रामाणिक तथ्य संग्रह करा जाय थाए एवं सेठी कौन करा ना क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन तन्न तन्न करी अनुसंधान करा जाय थाए एवं जो हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप रही ताकू कौन करिया पड़ता ना प्रमाण करिया प्रयास करा जाय थाए सी होची गवेषणा आउ रेडमैन एंड मोरे कहउचंती रिसर्च एज ए सिस्टमाइज्ड एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज नूतन ज्ञान आहरण करबा पई नूतन ज्ञान संरचना करबा पई बा नूतन ज्ञान सृष्टि करबा पई बा सर्जना करबा पई जो प्रक्रिया जो सिस्टमैटिक प्रोसेस प्रक्रिया अछि ताकू कहा जाय research. So we could understand better what is the meaning of research. Let us discuss what are the characteristics and nature of research. First thing that nature is a goal directed process. Without any purpose, without any goal, we cannot conduct research. So at first, the first condition of the research is we have to fix the goal. So it is a goal directed process intending to solve the problems. कौन सी समस्या समाधान करिया पई ये होची एक प्रायोजित प्रक्रिया ये होची एक लक्ष्य भित्तिक उद्देश्य प्रणोदित प्रक्रिया होची गवेषणा इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल एंड ऑब्जर्वेबल एविडेंस गवेषणा सब बेले प्रामाणिक तथ्य प्रामाणिक सत्य ऊपर ही विश्वास करे यह कोनोसी इमोशन ऊपर विश्वास करे नाही इट डिपेंड्स एम्पिरिकल और द ऑब्जर्वेबल एविडेंस इज रिजेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्टिविटी कोनोसी प्रकार पक्षपातिता को से कोन करे संपूर्ण रूप से रिजेक्ट करे से पक्षपात को ग्रहण कर नाही गवेषणा रिसर्च इन्वॉल्व्स precise observation and accurate description using reliable and valid data research सबले कोन करूची ना जे वैलिड तथ्य बा रिलायबल तथ्य संग्रह करूची कोन करिया पे एवं प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन माध्यम रे माने कोन होची ना ठीक पर्यवेक्षण माध्यम रे एवं विश्लेषण माध्यम रे से कोन करूची तथ्य संग्रह करूची एवं से तथ्य गुडी को कोन करूची विभिन्न प्रकार परिसंख्यान बा स्टैटिस्टिकल टेक्निक को व्यवहार करके ताको कोन करूची एनालिसिस करिया पे चेष्टा करूची रिसर्च emphasizes the development of generalization principles of theory that will be helpful in you are predicting future occurrence research कोन करछि विभिन्न प्रकार तथ्य सो विभिन्न प्रकार कोन तत्व से विकास करूछि विभिन्न प्रकार सिद्धांत रे पहुंचे चेष्टा करूछि विभिन्न प्रकार नीति और नियम जो अछि ताकू से कोन करछि डेवलप करछि रिसर्च Research involves gathering new data from primary or first-hand sources or using existing data or for new purposes. गवेषणा भी कौन करछि नूतन तथ्य प्राथमिक तथ्य विभिन्न प्रकार फर्स्ट हैंड सोर्सेस रु विभिन्न प्रकार तथ्य संग्रह करूछि काहे कि ना बिना तथ्य रे प्राथमिक तथ्य हो कि माध्यमिक तथ्य हो जो सत्य सठिक तथ्य संग्रह न कले आमे सिद्धांत रे पहुंची परनी सत्य रे पहुंची परबो नै रिसर्च रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज Research strives to objective and logical, applying every possible test to validate the procedure employed the data collected. सब बेले मन रखिबा जेतला हम तथ्य संग्रह करिया पे चिंता करछंती रिसर्च पे गवेषणा पे जो तथ्य आणछुंजी से तथ्य संग्रह कला बरे हम जो प्रकार टेस्ट आम व्यवहार कर जो तथ्य संग्रह कर जो विभिन्न प्रकार उपाय अवलंबन कर भैलिड होता दरकार एवं से भैलिड तथ्य संग्रह हो पार द्वारा नचेत आप गवेषणा कहीपर ना आउ बड़ कथा हूँ रिसर्च इनवॉल्व्स द क्वेस्ट फॉर आंसर टू अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स जो समस्या गुड़िक समाधान हो पार ना से समस्या को समाधान करने रिसर्च बा गवेषणार मुख्य भूमिका रही है रिसर्च समटाइम्स यू रिक्वायर्स करेज रिसर्च इज रिप्लिकेबल और टेस्टेबल गवेषणा को बारंबार परीक्षा करा जो सिद्धांत आम पहुँचले से सिद्धांत को अन्य मान द्वारा कौन कर प्रमाणित करने चेष्टा करेंगे ताकू चैलेंज भी कराए जिते चैलेंज कलापर भी जिते परीक्षा कलापर भी तार सिद्धांत कौन आसो सब सठिक है तो सठिक रिसर्च सठिक दब जदि सठिक तार मॉडिफिकेशन भी कराए फर्दर रिसर्च माध्यम तेणुक गवेषणार गुरुत्व बेसी अच्छी एवं ये हूँ गवेषणार डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ रिसर्च लेट वी डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर रिसर्च इज डिवाइडेड थ्री पार्ट्स प्योर रिसर्च applied research and action research pure research is otherwise known as the fundamental research and these research the fundamental or pure research is always meant for developing new theories
okay, developing different critical problems, etc. And these the findings of this type of research are purely universal, that is accepted by the whole world or the people of the whole world. So this is the pure research. And applied research means what the theories have been developed, what the conclusions are conducted through the pure research or fundamental research. These are applied in the real field. Applied in the means what the theories or findings developed with the pure research that are applied by the applied research. And what is action research? Action research is very important research that is conducted by the practitioners. Here there is no need of the statistical knowledge. There is no need of the deep knowledge on the research. Anybody can conduct the action research, starting from our mother to any businessman, teacher, etc. all can conduct the action research. अर्थात प्रकृति अनुसार कौन करा गवेषणा को तीन भाग व्यक्त कराई। गोटे हूँ प्योर बा शुद्ध बा मौलिक गवेषणा, आ गोटे प्रयोगात्मक गवेषणा, आ गोटे हूँ क्रियात्मक गवेषणा। तो जो जो शुद्ध गवेषणा है विभिन्न प्रकार तत्व, विभिन्न प्रकार जिन बिग बैंग बर्तमान गवेषणा लोक मैंने करूँ प्योर रिसर्च भी कह न्यूटन जो लॉ आसला बा लॉ ऑफ रिलेटिविटी आसला, ये सब कथा आसला आम कौन कहीपर ना प्योर रिसर्च रहीपर। एवं प्योर रिसर्च बा शुद्ध बा मौलिक गवेषणा जो सब तत्व आविष्कार कला, जो सिद्धांत पहुंचला, से तत्व सिद्धांत गुड़ी प्रयोग करने क्षेत्र में जो प्रयोगात्मक गवेषणा निहाती व्यवहार करा जाए था। एवं जो एक्शन रिसर्च है क्रियात्मक गवेषणा में कहे, ये क्रियात्मक गवेषणा कौन कर ना गोटे छोट छोट समस्या इट इज डन बाय द प्रैक्टिशनर्स फॉर इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मानकर जन शिक्षक श्रेणी प्रकोष्ठ देखु गोटे पिला पाठ को शुणुना, पाठ क्लास रे बसुची पाठ शुणुना, कहीं से पिला शुणुना, तार कौन समस्या अच्छी, केमिति कले से पाठ शुणव, सो ताकू जो प्रकार गवेषणा कराए एक्शन रिसर्च। आ गोटे छोटे एग्जांपल दिया जाए पारे, माँ टे बारंबार आज पिला को खुआई चेष्टा कर माँ पिलाटे खाऊ ना, आज गीत शुणाऊँ, काली आउ गोटे कम कर, ये गोटे प्रकार गवेषणा मार जी से प्रयास कर गवेषणा माध्यम सी कौन पिलाटा को खुआइबा नूतन नूतन उपाय कौन उपलब्ध एक्शन आउ रिसर्च काम करने गवेषणा एक्शन रिसर्च कहुए एक्शन रिसर्च कह जाए। Purpose upon the basis of the purpose, research may be divided into three parts: the historical research, descriptive research, and experimental research. Historical research, you are investigating what was or about the past. Descriptive research, you are studies on what is or the present. And experimental research try to relate between the cause and effect relationship. What will be or what ought to be. ऐतिहासिक गवेषणा कौन करे, अतीत को अध्ययन करे। डेस्क्रिप्टिव कौन करे, वर्तमान संबंध अध्ययन करे। एक्सपेरिमेंटल बा जो कहे ना जो परीक्षण गवेषणा जो कहे सेठी कौन करे से ना व्हाट विल बी गोटे जब यह प्रयोग करा जाए कौन हो पारे, ए प्रकार बिहेवियरल चेंज कराला पर ए प्रकार कौशल अवलंबन कौन कौन परिवर्तन हो पार, से कज इफेक्ट प्रेजेंट और पास्ट जो फ्यूचर ताको कौन कर रिलेशन करने चेष्टा करे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सेमिति डाटा जो कलेक्शन करा जाए ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा एनालिसिस, सो और द मेथड एंड अप्रोच ऑफ डाटा एनालिसिस एज योर रिसर्च में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च। गोटे हूँ माने आम कहवा आकार माने संख्यात्मक गवेषणा आउ हूँ गुणात्मक गवेषणा बा संख्यात्मक गवेषणा कहवा परिमाणात्मक गवेषणा कहवा जो गवेषणा आम कौन करथिबा ना सफिस्टिकेट वी यूज द सफिस्टिकल टेक्निक्स वी ट्राई टू क्वांटिफाई द डाटा और क्वांटिफाई द डाटा। अच्छा गोटे परिमाणात्मक आम सिद्धांत रे पहुंचा प्रयास करवा जोटी आम कौन करवा ना विभिन्न प्रकार स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करवा सफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करवा ताको कह क्वांटिटेटिव डाटा। एंड क्वालिटेटिव डाटा आम कौन करवा क्वालिटेटिव डाटा आम कौन डाटा गुड़ा को डेस्क्रिप्शन करने चेष्टा करवा जमी आम केस स्टडी है गोटे बेस्ट एग्जांपल आसला फेनोलॉजिकल रिसर्च आसला एथनोग्राफिक रिसर्च आसला एगुड़ा सब क्वालिटेटिव रिसर्च भितर आसो। क्वांटिटेटिव भितर कौन आसो आम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आसो आन्य सब रिसर्च से आसो। लेंथ ऑफ टाइम अनुसार लंगिट्यूडनल रिसर्च एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जदि गोटे इश्यू उपरे बा गोटे पर्टिकुलर सैंपल उपरे आम दीर्घ दिन रिसर्च करवा ताको कह जाए लंगिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहले से पर्टिकुलर इश्यूज उपरे विभिन्न सोर्स रो शॉर्ट टाइम भीतर जो रिसर्च आम करवा ताको कह जाए क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। सिमिलरली रिसर्च इज डिवाइडेड इनटू द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और फेनोमेना वी कैन से द एजुकेशन रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च, clinical research, philosophical research, psychology. For example, we are conducting research on the educational research. We can say that the educational research. Whenever we are conducting research on the industrial purposes, that is called the industrial research. It means on the basis of the we can say what the aspects
or the area specific. So research is also of different types. So dear friends, you might have understand what is the research, the derivative meaning of research, the you can say the dictionary meaning of research, then the research, the definitions given by the different experts. Then we discuss regarding the nature and characteristics of research, and finally we discuss the different types of research. I hope you could have understood the short topic. And if you have any difficulties, you can write in my your the YouTube channel. You can write, give your remarks, and you can also suggest. Thank you all for your watching with patience. Thank you.